Evening. Okay, so let's start the session. So, mm, okay. So last time we started one new topic, which was Azure Storage account. So we will complete that in today's session, and then tomorrow we will start the new one. So let's start. So far what we have discussed in the Azure Storage, we have discussed about Azure Storage account. Then we discussed about the types. In the types, we have discussed about standard and premium. Under the standard, there are two categories, general purpose version 1 and general purpose version 2. And in the premium, we have three categories, blob, files, and optimization. So we discussed about these types. Then we had discussed about the type, the kind of storage, or you can say the kind of data. So data kinds, where we discussed about container, you can also call it blob. Then we discussed about file share, then tables and queues. Then we discussed about the creation of a storage account, how we can create that. And then we discussed about how we can uh, create a container, how we can upload the blobs. EUES. My spellings are very bad actually. Yeah. So queue storage is there only. After that, we have discussed about data access methods. In the data access method, we have discussed about anonymous access, anonymous. Then we discussed about the access keys. Then we discussed about our SAS, which is shared access signature. So these things we have discussed practically. Then one thing is pending, which is Azure AD authentication that we will discuss today itself. After this, then we will talk about file share practical today. After the file share, then we will discuss about object replication group or object replication policies. Then we will be discussing about lifecycle management policies. After that, we will discuss about the storage account tiers, where we will talk about hot, cool, cold, and archive. And after that, we will talk about the replication options. Under the replication options, we will talk about LRS, ZRS, GRS, and RA-GRS. And once this is done, then we are done with the topic of storage account. So these topics we have to complete today itself. So let's start. So let me first create one of the storage accounts. So I will just go into my portal and let me create the storage. And one more topic we have to discuss about is recovery. If any storage account is deleted, or if any file share gets deleted, or in case if any blob gets deleted, then how we are going to recover them. So these topics also we will discuss. So there are a lot of practicals in the storage, and all of them are very easy. Let me log in. Default, as we discussed last time, I will give the name cont01, then create. So inside the new container, I will upload some data. So here I will upload this one. Then I will upload this one. What happened? Oh, I just clicked on the download button mistakenly. I have to click on upload. So upload this one, then upload this one. So I will upload two files. Click on upload. Only one got uploaded.
Let me upload the second one as well. This one, then this one. This is already there. Okay. So this one. Done. Okay. So we have two files here. Last time we discussed about the access methods, like we can access them anonymously. So anonymous access is not secure. So in the company, generally, no one gives the anonymous permission. If you will give the anonymous permission to someone, so anyone who have the URL, they would be able to access your data. They can download your data, which is not secure. So if there is any information that you want to broadcast, that time you can use the anonymous access. Otherwise, for critical data, company never uses the anonymous access. Second option we discussed about is access policy. So in the access policy method, we can create one of the access key. That access key can be shared with another person, and another person can configure that access key into Azure Storage Explorer, then can establish the connectivity to the data. So through the access key, the data can be secure, but there is a limitation. Limitation is if the access key goes to the wrong hand, so we need to rotate the key. Plus, there is no specific option to ensure the security of specific data. For example, if I want to give the read-only access to this particular file, so that access is not available with the access key. We have to give the full permission. So if someone have the access key, that person will have the full permission over the storage account. That person can download the data. That person can do anything. He can upload, he can download, he can delete. So if I want to apply the specific restrictions, for example, I don't want that user should be able to download something, user should not be able to delete something, user should not be able to modify something. So that kind of policies are not there with the access key. Plus, if I want to set the expiry date of the access key, let's say I only want that access key should be valid for 24 hours. So that option is also not there with the access key. And if I want to apply some more restriction related to the IP addresses, so that kind of options are also not there. So access key is a secure method, but if I want to use multiple features, then access key is not a suitable method. So if I want to give the specific access to a particular data, even from the category also, I have container, I have file shares, tables, and queue. But I only want to give the access to the container only. I don't want to give the access of file shares. Or inside the container, I want to give the access of a particular container only. For example, let's suppose in the container we have these two files. I only want to give the access of this file only. So that option, these kind of options are there with the SaaS, shared access signature. So shared access signature is also going to create one encrypted access method, but this method is more secure as compared to the access key. So here you can define the specific access to the particular data. Plus, you can define the expiry date of the keys. So automatically the keys are going to get expired. And you can apply the restrictions like read-only access you can give to the data. You can give the non-deletion access to the data. So these kind of options are there with the SaaS. So we also discussed this category last time. Now today, I will start with the Azure AD authentication. So how the user are going to access the data using the Azure AD authentication, that we will discuss today itself. So for this practical, what I'm going to do, I will create one VM because we need to install the Azure Storage Explorer. So let me create one virtual machine. As I mentioned last time, you guys can install the Azure Storage Explorer into your laptop as well if you want to. Otherwise, you can create a virtual machine as well. So I will create a VM, choose the same resource group, VM-01. Then server 19 I will choose. So next, and review plus create. .
Now let's wait. So after this installation is done, then I will install the Azure Storage Explorer tool. Then we will see how we can use the Azure AD authentication method. So this installation is done now. Let me take the remote of it. So just go to the VM, then I will connect. So password. Yes, Pooja. हेलो Pooja, yes. सर ये जो हम अभी टॉपिक पढ़ रहे हैं ये एजर नेटवर्किंग में ही आएगा ना? नहीं, ये स्टोरेज अकाउंट है। ओके सर नेटवर्किंग ओके। खत्म हो गया, वो ट्रैफिक यस सर। मैनेजर तक ही था। ओके सर ओके। तो आज से जो टॉपिक शुरू हुआ है वो स्टोरेज अकाउंट। जो लास्ट संडे ही हो गया था स्टार्ट। ट्रैफिक ओके ओके मैनेजर सर। खत्म होने के बाद स्टोरेज स्टार्ट हो गया था ना। सीधा कनेक्टिविटी ऑफ Azure AD authentication. So let me open the browser. So just go and search Azure Storage Explorer download. Go to the official link. Just click, scroll down, then click on download. And from here we can choose our operating system. So it is Windows. Just click on Windows. Now the downloading has been started. After this, we need to install this. So installation is very simple. Double click next, next install. So just select the setup. Let the downloading be completed first. Yes, Pooja. हाँ सर, ये लास्ट क्लास में हमने जब ये टूल डाउनलोड किया था तो हमने यहाँ So if one connection goes down, the traffic will be switched to another connection. But when you are working from home, so in work from home scenario, VPN is the only option. If you are unable to connect with the VPN, then you cannot access most of the applications, most of the environment. In some companies, as an alternative to some of the work, they use Citrix as well. Like in case the VPN is not working, so there are some application which will be published on the Citrix. So through the Citrix that can be accessible, but this is not for the broader level. This will only give you the access to some application
which is having the publish app feature on the Citrix. Otherwise, VPN is the only option. So if someone is unable to connect with the VPN, there is no alternative. If it is happening because of the VPN issue, then company is responsible for it. They will get it fixed. But if it is happening because of your internet connectivity, because if the internet is very slow, that time also you cannot connect to the VPN. And if there is some disconnections between the internet, that time also VPN connection will not be possible. So if it is happening because of you while working from home, company will ask you to come to office then. There is no alternative. They will mark your absent then because you are not able to work from home, so no chance. Portal can be logged in some scenarios because there are multi-factor authentications in company. So Azure portal can be logged in using the MFA, using second factor authentication, but most of the applications are not going to work without VPN. So that will become the problem. You will not be able to work fully. If the VPN is not connected during work from home, you will not be able to utilize the full resources. You will not be able to work. So if that's a हाँ technical issue for some time, that is fine. But if it is regularly happening, company will ask you to come to office. No chance, no option, because that is your problem, right? सर लाइक समटाइम्स मैं देखती हूँ कि कंपनीज में भी सर जो यूजर्स आते हैं जैसे उनको इमेज कराया है तो कुछ टाइम मैंने लॉगिन नहीं कराते हैं तो सर डोमेन इशू आ जाता है तो वो क्यों आता है एंड मतलब सर उसे फिर कैसे मतलब फिक्स करना हो इमीडिएटली। वो आप लोगों को फिक्स नहीं करना है वैसे। वो डोमेन इशू इसलिए आता है क्योंकि कंपनी के अंदर अकाउंट अकाउंट लॉगिन पॉलिसी लगी होती है। फॉर एग्जांपल लेट्स से कुछ कंपनी में 30 डेज है, किसी किसी में 45 डेज है, इन सम कंपनी इट इज 60 डेज। सो उस टाइम तक डोमेन जॉइन लैपटॉप पे अगर यूजर लॉगिन नहीं करता है, सो देर इज वन ऑप्शन, वी कॉल देम सेशन ऑफ इनएक्टिवनेस। ये अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी के अंदर मिलता है ग्रुप पॉलिसीज में। सो इफ दैट इज अप्लाइड और वहां पे अगर आपने एक टाइम ड्यूरेशन डाल रखी है लेट्स से फॉर 1 मंथ, सो इफ द यूजर विल नॉट लॉग इन फॉर 1 मंथ, देन द यूजर विल नॉट बी एबल टू लॉग इन फर्दर बिकॉज डोमेन विल बी डिस्कनेक्टेड। सो उसका सोल्यूशन वही है कि उस लैपटॉप को फिर ऑफिस में बुला के देन उसको डोमेन नेटवर्क में दोबारा से रीजॉइन करना पड़ता है थ्रू द लैन। वो दोबारा रीजॉइन होता है, फिर वो डोमेन से आउट हो गया तो दोबारा रीजॉइन होता है। इन सम सिनेरियो इफ देर इज वेरी हाई लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वहां पे क्या होता है, वो बंदा घर पे ही बैठा हुआ है, थ्रू द लैब्स देर इज वन ऑप्शन लैब्स, लैब्स के थ्रू उसके लोकल एडी का पासवर्ड रिकवर करके देन कंपनी just change the OU and they do the force domain joining which is called offline domain joining। so वो स्क्रिप्ट के थ्रू होता है, बट वो वहीं पे होता है जहाँ पे उन्होंने होराइजन वगैरह कॉन्फ़िगर कर रखा है, मतलब इस टाइप का इंफ्रा कॉन्फ़िगर है तो। अदरवाइज इफ they have not configured it, so they will ask the user to come to the office with the laptop, then the rejoining will happen। okay। सर लाइक अगर दोबारा रीइमेज करते हैं तो भी ये इशू फिक्स हो जाएगा। तब भी हो जाएगा, फिर दोबारा करोगे ओएसडी, अगर वो SCCM या WDS के थ्रू हो रहा है तो वैसे भी डोमेन रीजॉइन हो जाता है। ओके सर ओके गॉट इट थैंक यू। okay, so now let me install this tool। so I will just double click on this, then next finish। so install only for me, accept the license, then install। This is the prerequisite। so .NET 8 is also going to install। if it is already there then it will be skipped, otherwise it is going to get installed। so the location of the installation will be C drive as always, then next।
then finish. So we have the Azure Storage Explorer tool configured now. Now let me show you the third option, which is called Azure AD authentication. So generally what happens, this is also one of the secure method. Here also we can define the limited access. For example, you just want to give the read-only access to someone, you can give it. You want to give the read and write access also, you can give it. So here we don't have the requirement of any key. What happens in the Azure AD authentication? So whatever accounts are available on the Azure Active Directory, whatever user accounts are available on the Azure Active Directory, we can grant them the access of the storage account, and then they can log in with their user ID and password of the Azure AD. Then they will be able to use the storage account. So that is the Azure AD authentication method. So if we have the user account available on the Azure portal, we can grant them the access and they would be able to use it. So we don't have to rely on the keys method then. User can use this method also. So this is also secure. But if I talk about more secure method as compared to these three, because this is not secure, this has no security. But if I compare among these three options, then the highly, very much secured option is SAS. So SAS is very, very secure option as compared to these three. But if I talk about the second most secure option, so this is Azure AD authentication. Access key is secure, but it has limitations, so I will give it third rating. So number one is SAS. SAS is always number one. It uses double layer of encryption with the security. So let's talk about this Azure AD. So Azure AD is also one of the topic which we will discuss in detail in the next weekend. Next weekend we will discuss about this topic. This is one class topic. There will be a lot of discussions here: user account, group accounts, reset features, login features, permission management. So we will see a lot of things here. But for now, let's use it. So what you have to do in order to create the account on the Azure Active Directory, you just need to go to the portal, and here you have to search for Intra. You will search for Intra. So there will be one option, Microsoft Intra ID. Azure Active Directory has been renamed in October 2023, and now it has become Microsoft Intra ID. पहले Azure Active Directory के नाम से जाना जाता था ये option, but in 2023 the Microsoft has renamed this option and now it has become Microsoft Intra ID. So Intra ID and Azure Active Directory both are same. Azure AD और Intra ID दोनों ही same है. So you don't have to be confused. So just search for Microsoft Intra ID. Then here you will just search for the users. These options I will discuss in detail in the next weekend. ये सब मैं समझाऊंगा आप लोगों को. Don't worry about it. This is a separate topic. Today we will just use the Azure AD authentication option. So I will not discuss much about this in detail. So you have to go to the users, and there is one user account here, which is my default user account. I log in with this user account. ये वाला user ID डाल के log in करता हूँ मैं. And in all of your Azure portal, when you will go to the all user option, so you will see there will be one default user account that you use to log in. हम लोग जो log in करते हैं, जो हम ये वाला ID डालते हैं, this is this user account actually, जो portal बनाने के time पे configure किया गया था. Now here what I will do, I will create a new company user. So for the creation, you just need to click on new user, then you will click on create new user. So what is invite, what is this option, we will discuss in the next class. For now, just click on create new user and just give any name to the user. यहाँ पे user का नाम डालना है. For example, I will give U1. So complete user ID will be U1 at the rate the domain which I configured during the portal creation. Portal बनाने के time पे जो ID use हुआ था वो यहाँ पे दिखेगा. In the company scenario, it will be U1 at the rate company name. जैसे उनका जो भी domain है, U1 at the rate wipro.com, U1 at the rate abc.com, whatever it is. So it will be here. In our case, it is a free domain, which is our email ID. So यहाँ पे दिखेगा U1 at the rate email ID dot on microsoft.com. It is a free. In the display name also, we need to copy paste the username. Then we have to create a password. So you can create a auto generate password as well. If you will just check this box, then there will be one auto generated password.
And if you want to create your own password, so you can remove this and you can type your own password as well. So whatever you want to do, it's okay. I will auto generate one password because when you will log in first time, you have to change the password anyway. जब कभी भी आप पासवर्ड सेट करोगे एजोर एडी में, सो व्हेन द यूजर विल लॉग इन फर्स्ट टाइम, यूजर विल हैव टू चेंज दिस, क्योंकि ये पासवर्ड तो आपको पता चल गया ना अब यू आर द एडमिन, यू हैव रीसेट द पासवर्ड, सो यू नो दिस पासवर्ड. So when you will share this password to the concerned user, for example, if I will share this password with U1, so U1 will have to change this password because of the security reason, क्योंकि admin को पता है password अभी. Admin can always do the reset of the password, but admin cannot remember the password of the user. It is out of compliance. Admin password change कर सकता है, but admin cannot know the password of user. Admin user का password नहीं जान सकता. So this is one of the thing. So what I will do, I will just use this auto-generated password. If you want to use the manual one, you can also type a new password. But password सोचना पड़ेगा मुझे. That is why I will just copy paste this password. Account enabled should be check, then review plus create. So one user account has been created now. If you will refresh, so you will find the user account. I just need to copy this user ID. So just copy, and this is my password. So what we can do, we can give this user ID and password to the user. U1 को ये share कर देंगे हम. Then U1 would be able to use the Azure portal. Now let me show you how the company works. So in the company, not everyone will have the admin access on the Azure portal. सबके पास admin access नहीं होगा. There will be the levels, there will be the designations, there will be the seniority. Accordingly, the admin access will be given to the user. ऐसा नहीं है कि सब लोगों को सारे पोर्टल पे एडमिन एक्सेस मिल जाएगा. नो, दिस विल नॉट हैपन. Even you guys will also not have the full control on the portal. There will be some restrictions so that you cannot do anything as per your wish. So as per the requirement, we give the permission to the users. So let's suppose if someone is from the development team and that developer has one of the storage account on this Azure portal. उस developer का ये storage account है. For example, this is the storage account of developer. Now that developer is asking for the access of this storage account in the Azure portal. We will not give him the access of VM. ये सब access नहीं देना हमें उसको. I don't want to give him the access of VM. I don't want to give him the access to create something, delete something, nothing. I just want to give him the access of storage account कि उसको सिर्फ storage दिखे. Rest resources user cannot see. User बाकी की चीजें नहीं देख सकता. Only the storage account I want to provide. Because he is a developer, so he only needs the storage. So what I will do, I will just create the user account from the intra ID portal. सबसे पहला काम है उसका user ID बनेगा कंपनी में. And on this user ID we will give the access. इस user ID पे access दिया जाएगा उसको. So how the access will be given? So before access, let me first log in with this user ID and password. So this is the user ID of U1. U1 को मैंने share कर दिया है ये. U1 has this user ID and this is the password. Now the U1 will log in. So I will open another browser now. क्योंकि एक browser पे आप multiple user login नहीं कर सकते. So let me open another browser. And here I will open the same portal.azure.com. And here in this section, we have to copy paste this user ID. So this is the user ID. So U1 will log in with this. So just paste. Next. And in the password section, I will just copy paste the password. So this is the password which has been shared by the admin. ये मुझे admin ने दिया. So I will just paste it, then sign in. So first time I will have to change the password as per my requirement. I will copy paste the old password, then I will create a new password. So I will just create the password mojojojo@123, then sign in. आप लोग कुछ भी password create कर लेना. User की मर्जी, whatever password he want to do. So he can just set it up. Click on next. So it is asking us to
set up the authenticator option. Authenticator basically means the multi-factor authentication. So you might have noticed in your company, there are some scenario when you log in. So you have to approve the notification from your mobile phone through authenticator app. So this is that option. So in order to secure the access, after entering the password, user will have to approve the notification from the mobile phone. So that is Microsoft Authenticator app. So that Authenticator app has to be installed into your mobile phone. You can install it from the Play Store. It is free of cost, no charges. Even in the company also, it is free of cost, no charges. So then we have to set it up. If you don't want to use this Authenticator app, so you have the different option as well. You can set up your mobile number for the authentication. So there are multiple options here. Let me see if I can skip this option because I don't want to use this. So पहले skip हो भी जाता था, but nowadays because of high level of security, the Microsoft does not allow to skip the multi-factor authentication method. Let me just go to the portal क्योंकि अब इन्होंने बंद कर दिया है. पहले मतलब क्या होता था, पहले in the sense before March the person was able to skip the multi-factor authentication for some days, but अब क्या कर दिया है, because of high level of security it has become mandatory. But let me see if I can just modify something from the portal. कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, let me see, otherwise मैं setup कर लूंगा, no issues with that. It is fine. Disabled. There is no option. करना ही पड़ेगा. एक बार दोबारा रिफ्रेश कर लेते हैं. लेट मी सी स्किप कैन बी डन और नॉट. यूज ए डिफरेंट अकाउंट, सो नहीं है, स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं है. साइन आउट, साइन इन. Let me set up then. So I will just click on next. I generally don't use the Microsoft Authenticator app on my mobile phone क्योंकि मतलब बहुत सी कंपनी में हार्डवेयर टोकन्स के थ्रू भी लॉगिन होता है, बहुत सी कंपनी में कुछ SMS कोड्स के थ्रू भी लॉगिन होता है. So earlier I used to have this Authenticator app, but now I uninstalled it. So let me install it from the Play Store. You guys can also install it from the Play Store. It is free of cost. So अपने जैसे एप्पल है तो एप्पल में iOS स्टोर से, एंड फ्रॉम द एंड्रॉयड यू कैन जस्ट गो टू द प्ले स्टोर एंड यू कैन सर्च फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर. दिस इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन. तो इसके थ्रू कर सकते हो आप. सो आई विल लेट मी इंस्टॉल इट इन माय मोबाइल फोन. अनफॉर्चुनेटली आई कैन नॉट शेयर माय मोबाइल फोन स्क्रीन क्योंकि उस पर कोई रिमोट का टूल नहीं है मेरे पास. बट बहुत से और यूज़ करना है तो कर लो फ्री में डाउनलोड करके. So I am just in the process to download the authenticator in my mobile phone. And after that, what we have to do after the installation is done on the mobile phone, you can simply click on next. And here in the setup account option, you need to click on next. Then there will be one barcode, this one. So you have to scan this from the authenticator app. Then the account can be registered. So let me do that. So how will you scan? So for the scan, you just need to open your Microsoft Authenticator app after the installation is completed. And once it is completed, then you need to open the app, and in the app there will be one option, add account, and on the top right also there is one plus button. So you can just click on that plus button and there will be option of work or school account. So you have to choose work or school account.
then there will be option of scan a QR code. So you can just click on scan a QR code and you can scan this from the laptop. Laptop की screen को scan करके then you can click on finish. And in case you are unable to scan this code, so you can just regenerate the code as well. So my is already done. Someone has used this, I guess. स्क्रीन से कोई अभी इस कोड को स्कैन मत करो, बिकॉज आई एम यूजिंग इट, नहीं तो तुम लोग मजे लेते रहोगे और टाइम खराब होगा. लेट मी रीजनरेट दिस वन. मैं पहले स्क्रीन ऑफ कर देता हूँ, अदरवाइज यू विल स्टार्ट स्कैनिंग एंड मेरे मोबाइल से मैं रजिस्टर नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज एक टाइम पे एक ही स्कैन होता है. यस पूजा. सर मेरी कंपनी में मैं ऑलरेडी ये यूज कर रही हूँ सर अभी, तो उसमें कंपनी का जो आईडी है वो कॉन्फ़िगर है, तो मुझे ये प्रैक्टिकल करने के लिए मतलब नहीं कर उसे सकते दोबारा हो, कुछ प्लस करना। प्लस पे क्लिक करके ना स्कैन कर सकते हो, कोई अच्छा। इशू नहीं है. जब हो जाएगा ओके तो सर। डिलीट कर देना उस अकाउंट को वहां से. ओके सर ओके। पर्सनल भी स्कैन कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है. या सो नाउ इट इज डन. So let me share my screen again. So scan ही करना है बस. After the scan is done, then your account will be registered on the mobile. Now you can see I have logged in. So I will just cancel this. So I have logged in with the U1 user account. You can see on the screen this is U1. U1 से login कर लिया है मैंने and this is my admin portal. ये मेरा admin वाला portal है from where I have given the access and this is my U1 portal. So U1 has logged in. This is how the users will log in into the company. Company में किसी को Azure का access दोगे ना, वो ऐसे portal पे login करते हैं इस type से. So they will log in into the portal and whatever services we want to give them, we have to provide the access from the admin portal now. So U1 has logged in, but you can see there is no access for the U1. U1 के पास कोई access नहीं है, देखो. He cannot open anything. If you go to the subscription, see, there is no subscription. He cannot see any subscription. And if you go, let's say, to create virtual machine, so he will not be able to create the VM as well. See, there is a lock. So whatever option you will search, if you will search for a storage account, it's not happening because we have not given any access. U1 just have the access to the Azure portal, but there is no resource access I have given to him. तो कुछ भी open करोगे, it will not open. See, it is just disabled. If you will try to create something, there will be errors. ये lock screen आने लग जाएगी इस type की, just like this one. See, this kind of screens will appear. So now let's see how we can give the permission. So that permission is called Azure AD authentication. ये जो हम permission देंगे अभी for the storage account, that is called Azure AD authentication. So for the permission, what we have to do, we need to go to the admin portal. Niranjan wants to ask something. Yes, Niranjan. हाँ, गुड इवनिंग सर. हाँ Good सर, मैं evening. पूछ रहा था, ये मेरा 2 क्लास पिछला छूट गया था, इससे कोई कनेक्टिविटी इसमें है नहीं ना? पिछली क्लास जो संडे को हुई थी हाँ, उससे सैटरडे कनेक्टिविटी संडे. है. नहीं, सैटरडे वाली नहीं, संडे वाले से ये टॉपिक स्टार्ट हुआ था, उससे इसका कनेक्शन है. संडे को ठीक. आखिरी जो 1 घंटा था उसमें स्टार्ट हुआ था. मतलब संडे को ट्रैफिक मैनेजर खत्म हुआ, देन दिस टॉपिक गॉट स्टार्टेड. तो संडे की वीडियो देख लेना, स्टोरेज तो अकाउंट एक जहाँ चीज से मैंने स्टार्ट किया था. मैं पे यू गो अकाउंट एक्टिव किया अजूरे में, उसमें अभी प्रैक्टिकल में कर नहीं रहा हूँ, उसमें सर अमाउंट तो नहीं ना आएगी? नहीं, नहीं आएगा, ठीक सर, नहीं थैंक यू. आएगा. ओके. सो what I will do to give the permission, this is my admin portal. I am in my admin portal now and I will go to the storage account. See, I want to give the permission of this storage account to U1. इस storage की permission U1 को देनी है मुझे. So I will go to this storage account, click on this and there is one option, identity and access management, access control, IAM, identity access management. I will just click on this. Yes, Pooja.
हेलो। यस। सर मुझे और एक पूछना था कि मेरी कंपनी में जैसे कि सारी चीजें मेरे से नॉन टेक्निकली कराते हैं, तो आफ्टर कंप्लीटिंग दिस क्लास और अगर मैं प्रैक्टिकल इसके कंटिन्यू सब करती हूँ तो मुझे कुछ उतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा ना सर, अगर मैं क्लाउड में एंट्री करूँ तो? प्रैक्टिकल करा होगा तो कुछ नहीं, कोई इशू नहीं है। यही सब होता है, यही पोर्टल होता है, सब कुछ यही होता है। बाकी वो केटी में बता देते हैं कि क्या क्या काम होता है उनके वहाँ पे, वो सब 1 महीने की केटी में सब समझा देंगे। हमारे यहाँ एक्स्ट्रा क्या होता है, पोर्टल यही होता है, ऑप्शन यही होता है, कुछ नया नहीं होता। जिसको आता है प्रैक्टिकली दैट पर्सन कैन मैनेज। क्योंकि जिसको सर वो प्रैक्टिकल डोमेन नहीं आता वो ज्वाइनिंग। नहीं कर सकता। यस। यस। क्योंकि वो डोमेन ज्वाइनिंग एंड ऑल मेरे से कोई भी चीजें वो नहीं करा के लेते, मतलब उन्होंने नॉन टेक्निकली इतना रोल दे के रखा है कि टेक्निकल में बिल्कुल भी मतलब इन्वॉल्व नहीं होने देते उतना। वो सर्विस डेस्क होगा ना। यस। हाँ, वो नॉन टेक्निकली होता है, वो बस रिपोर्ट टिकट्स वगैरह असाइन करने का काम होगा। हाँ वही वही सर, वही वो फोन पे हाँ, काम करना रहता है, अटेंडेंस, डेली रिपोर्ट एंड ऑल ये सब चीजें। नहीं, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इफ़ यू आर डूइंग द प्रैक्टिकल ऑन रेगुलर बेसिस। तो फिर तो कोई इशू नहीं है, यही सब होता है, कोई चेंजेस नहीं होता पोर्टल में। सेम पोर्टल होता है एज इट इज़, यही। ठीक है। ओके सर। तो जस्ट डू यस द सर, यस। प्रैक्टिस ऑन रेगुलर बेसिस, देन नथिंग इज गोइंग टू स्टक। ओके सर। ओके। कपिल, यस कपिल। सर प्रैक्टिकल कितने बार मतलब हैंड्स ऑन होना चाहिए? यार वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम कितनी जल्दी सीख जाते हो। जैसे मैं पहली बार में नहीं सीख पाता, टू बी वेरी फ्रैंक। हाँ, तो मैं मेरी मतलब वही प्रॉब्लम तो है। कुछ बहुत सीरियस टॉपिक होते हैं, तो मेरे को 2 से 3 बार प्रैक्टिकल करने पड़ते हैं, वो भी छोड़ छोड़ के, टाइम छोड़ छोड़ के। मतलब एक दिन में नहीं करता मैं 3 बार। हाँ और कुछ मतलब। नॉर्मल से प्रैक्टिकल होते हैं कि स्टोरेज बना के दे दो, ये तो एक ही बार में समझ जाऊंगा मैं, तो ये तो मैं खुद हम्म, भी बना लूंगा। बट अब कोई जैसे मान लो ये वाला टॉपिक था VMSS, इट हाँ वॉज क्रिटिकल टॉपिक, मतलब बहुत सारे क्रिटिकल स्टेप्स टॉपिक। इन्वॉल्व थे। तो उसको हाँ एक बार में करने के बाद अगर मैं उसको फिर 3 महीने बाद देखूंगा तो आई विल नॉट बी एबल टू रिपीट इट। तो ऐसे प्रैक्टिकल्स में फिर करना पड़ता है बार बार। तो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लो कि किस टॉपिक में ज्यादा प्रैक्टिकल्स के ऑप्शन है, उसको करते रहो बीच बीच में। बाकी ये स्टोरेज बनाना, ये तो मतलब एक बार आज बना लिया, एक बार कभी फिर बना लिया जिंदगी में, सो ये तो पढ़ पढ़ के भी बना लेगा बंदा, इट्स नॉट अ बिग डील। बट ये जो टॉपिक जैसे ट्रैफिक मैनेजर, लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे, दिस काइंड ऑफ टॉपिक रिक्वायर्स प्रैक्टिस, क्योंकि इसमें प्रैक्टिस चाहिए। ऑप्शन बहुत ज्यादा है पीछे से। हाँ तो हाँ सर। उसको तो मतलब पक्का कर लो, उसके तो डिपेंड करता है तुम कितनी बार में करोगे। जैसे मैं होता तो 2 से 3 बार कर ही लेता, टाइम छोड़ छोड़ के, मतलब हर 15 दिन में या एक एक महीने के बाद। हाँ सर, तो बस सही है। इस टाइप से। क्योंकि मेरा ऐसा प्रॉब्लम है सर कि कुछ कुछ टॉपिक्स पिछला मैं भूल रहा हूँ, तो फिर इसलिए मैंने पूछा। नहीं, कुछ बड़े टॉपिक है ना जो, उसको तो हाँ करते रहे करो बीच बीच में। बाकी ये जो PM तो रेगुलर ही होते रहता है, सो इट्स वेरी नॉर्मल प्रैक्टिकल नाउ डेज। PM बनाना, ओके। ये तो हर प्रैक्टिकल में PM ही बनता है हमारा। हाँ सर। तो ये सब तो फिर पक्का ही हो जाता है। ओके ओके सर, थैंक यू। तो नाउ लेट्स कीप द एक्सेस देन। सर हेलो। यस यस पूजा। हाँ सर, सपोज हमारा थियोरेटिकल अच्छा है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन हमारा प्रैक्टिकल में उतना उतना नहीं कर पाए हम प्रैक्टिकल में, तो इंटरव्यू के टाइम पे उसका इम्पैक्ट होता है क्या? इंटरव्यू के टाइम पे तो नहीं होता, क्योंकि कुछ कुछ इंटरव्यूअर बस क्वेश्चन ही पूछते हैं, एंड इफ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट यू हैव गिवन द आंसर, सो यू विल बी सिलेक्टेड। बट व्हेन यू विल जॉइन द कंपनी, दैट टाइम इफ यू आर नॉट प्रैक्टिकली साउंड, सो उनको पता लग जाएगा ये किसी काम का नहीं है, तो फिर उनके डिसीजन है, दे विल फायर यू ऑल्सो। ओके सर। कुछ कुछ कंपनी होती है कि चलो ठीक है सीख जाएगा बच्चा, लेकिन कुछ कुछ होती है हटाओ इसको प्रोबेशन से, ये काम का नहीं है। प्रैक्टिकल का इम्पैक्ट आता है, इंटरव्यूज में नहीं आएगा, बट जॉब करते टाइम तो आएगा फिर। तो इसलिए प्रैक्टिकल मतलब पोर्टल पे हैंड्स ऑन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि नए नए में क्या होता है ना, योर TL विल बी मॉनिटरिंग एवरीथिंग। तो कुछ भी काम होगा केटी के टाइम पे, तो वो स्क्रीन शेयर कर करके तुम्हें समझाएगा, करवाएगा। तो बहुत क्लोज मॉनिटरिंग होती है स्टार्टिंग में, सो उस टाइम पे तो फिर पता ही लग जाएगा कि ये तो यार पोर्टल पे काम ही नहीं कर पाता है, ऑप्शन ही नहीं ढूंढ पाता बंदा। सो दैट इज द रीजन द प्रैक्टिकल इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द थ्योरी। जिसका प्रैक्टिकल अच्छा है ना, तो वो थ्योरी भी खुद बना लेगा। इफ यू विल आस्क मी व्हाट इज VM, if I don't know what is the definition of VM, I can relate it to the practical. I can simply tell to the interviewer that VM is a kind of virtual machine that we use to run the workload in the company. We run the multiple categories of server in the VM. So this kind of answers I can give. If
I am practically sound. If you will ask me what is a storage account, so I can simply tell them that in the storage account we just keep the data. But theory मुझे पता है, and if I don't know the practical, so there is no relevance. So both things should be clear. Theory बहुत डेप्थ में नहीं भी पता है, that is fine. If you know the fundamental, that is okay. But practical अच्छे से पता होना चाहिए. क्योंकि ultimately practical is something which is going to leave you survive in the company. Otherwise, there is no point. Theory तो कोई भी पढ़ लेगा, वो तो विकिपीडिया से मिल जाएगी. Yes, sir. ठीक है, तो प्रैक्टिकल अच्छा रखना. थ्योरी तो मतलब जब प्रैक्टिकल करते हो ना, हर चीज की थ्योरी यहाँ भी आती है. देखो यहाँ से लेट मी गिव यू व्हाट आई डू, क्योंकि मैं ना इतनी थ्योरी पढ़ता नहीं हूँ एक्चुअली. मतलब जब कोई एडवांस कुछ इश्यूज आ जाते हैं कंपनी में, देन आई जंप टू द माइक्रोसॉफ्ट डॉक्यूमेंटेशन. अब तो मेरे को पढ़ा पढ़ा के बहुत हैबिट हो गई है, इसलिए मेरे को बहुत डेप्थ में थ्योरी की नॉलेज है. अदरवाइज व्हाट आई यूज, what technique I use for the new topic. So when you create something, जैसे मान लो मेरे को थ्योरी में इतना इंटरेस्ट नहीं है, तो जब हम कुछ क्रिएट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल इफ आई विल क्रिएट ऐप सर्विस, तो देयर आर डेफिनेशंस, so you can just go through with every statement. तो एक दो बार जब कर लोगे ना, ये सब पढ़ लोगे, देन एवरीथिंग विल बी सेटअप इनटू योर माइंड. वो किताबें खोल खोल के पढ़ोगे, देन नथिंग इज गोइंग टू हैपन. जो मैं नोट्स देता हूँ या विकी, ये जो माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन है, ये अभी काम नहीं आते, ये इंटरव्यू के टाइम पे काम आ जाएंगे, लेकिन असली चीज यही काम आती है. जस्ट लर्न फ्रॉम हियर. वेन एवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, रीड द डिस्क्रिप्शन, मोटे मोटे पॉइंट्स पढ़ लो, क्यों बना रहे, क्या पर्पस क्लियर होना चाहिए, व्हाई वी आर क्रिएटिंग द ऐप सर्विस. वो डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ऐप सर्विस, व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस, वो तब काम आएंगे व्हेन यू विल बिकम L3 इंजीनियर और आर्किटेक्ट वगैरह पे जाओगे ना, जब कंसल्टेंट, तब. वो इतने L1 L2 के लिए इतना नहीं कि व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ ऐप सर्विस, व्हाट आर द डिसएडवांटेज एडवांटेज, इतना नहीं पूछता कोई. क्या होता है, व्हाट इज फंडामेंटल, कैसे क्रिएट करते हैं, क्या क्या प्रैक्टिकल्स है, वो सब क्लियर होना चाहिए. हर प्रैक्टिकल का पर्पस क्लियर होना चाहिए. सो आई फॉलो दिस प्रैक्टिस व्हेन आई यूज ए न्यू टॉपिक. बाकी उनको बार बार यूज करके तो फिर थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट फिर अपने आप ही स्ट्रांग हो जाते हैं. व्हेन यू विल वर्क इन द रियल कंपनी, कोई इशू आता है, कुछ डिप्लॉय करना होता है, सो वी गो विद द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन, वी गो इन द डेप्थ. तब कोई मेरे से बोलेगा कोई आर्किटेक्चर क्रिएट करके दे दो, सो तब तो मैं पूरा डेप्थ में ही पढ़ूंगा उस टॉपिक को. सो दिस हैपन्स विद द एक्सपीरियंस. वो एकदम से आप रातों रात डॉक्यूमेंट पढ़ के एक्सपर्ट नहीं बन जाओगे एज्योर में. सो नथिंग इज गोइंग टू हैपन. सो प्लीज रखो चीजों को, डू द प्रैक्टिकल वेरी वेल. फंडामेंटल अच्छे रखना, क्योंकि फंडामेंटल पे बहुत फोकस होता है इंटरव्यू में. तो ये सब नहीं पूछता कोई व्हाट इज VM, व्हाट इज स्टोरेज अकाउंट. वो प्रैक्टिकल फंडामेंटल्स पे, जैसे कि जैसे मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ कि एक्सेस करने के कौन कौन से मेथड है, इसमें कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है, क्यों अच्छा है, क्यों बुरा है. सो दीज थियोरेटिकल आंसर्स यू शुड नो. तो वो जो नोट्स वगैरह है उसमें मिल जाएगा आपको ये सब. उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी होते हैं नोट्स में. जब मैं अपलोड करता हूँ नोट्स, तो उसमें क्वेश्चंस भी होते हैं. उन क्वेश्चंस को गो थ्रू करो, यू विल अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. प्रैक्टिकल करो, देन यू विल डेवलप मोर अंडरस्टैंडिंग. ओके. Yes, सर sir. जो Clear. पोर्टल पर जो अपलोड करते हैं उसमें क्वेश्चंस नहीं होते सर, और 2 वीक से तो एक वीक से लास्ट वीक से तो नोट्स भी अपलोड नहीं किए हैं. मैंने उनको दे तो दिए थे, मैं आप लोगों को आज फिर दे दूंगा. मैंने उनको दे दिए थे सारे नोट्स, लास्ट टॉपिक के भी दे दिए थे, उसी दिन दे दिए थे क्लास खत्म होने के रात को ही, एंड सर 11:30 बजे. क्वेश्चंस नहीं है उनके नोट्स में, क्वेश्चन मैंने चेक किया था. कुछ कुछ टॉपिक में क्वेश्चंस है, कुछ कुछ में नहीं है. तो जहाँ पे नहीं मिल रहे हैं आपको, इट मीन्स वहाँ पे नहीं होंगे. बट मोस्टली बहुत सारे टॉपिक्स में क्वेश्चन है. तो जहाँ जहाँ पे असाइनमेंट क्वेश्चंस करके फाइल मिलती है, वहाँ पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको. जहाँ पे नहीं है तो उन टॉपिक्स में क्वेश्चन होंगे ही नहीं. या फिर नो ऐसा भी सर, होता है स्प्लिट सर में. पोर्टल पर नहीं है सर, आपने प्रोवाइड किए हैं बट उन्होंने अपलोड ही नहीं किए हैं किसी भी टॉपिक के क्वेश्चंस. जो आपने प्रोवाइड किए हैं वो भी नहीं है वहाँ पर. वैसे आप लोगों के पास आ गए ना वो क्वेश्चन जो मैंने प्रोवाइड किए हैं. ये सर जितना आपने प्रोवाइड किया सर उतना ही है. चलो ठीक है, मैं उनको एक बार बोल दूंगा, मैं उनको दोबारा डेटा दे दूंगा क्वेश्चंस का, सो दे विल अपलोड इट. मैं बात करता हूँ मंडे को. ओके. बाकी आज भी मैं आप लोगों को नोट्स दे दूंगा अपने एंड से भी स्टोरेज अकाउंट के, सो यू गाइस कैन गो थ्रू विद द नोट्स. नाउ अब इस पे आते हैं फिर से. सो लेट्स सी हाउ वी कैन प्रोवाइड द एक्सेस. एक्सेस कैसे देना है वो देख लो. सो आई एम इन द एडमिन पोर्टल. आई विल जस्ट गो टू द स्टोरेज अकाउंट, क्लिक ऑन दिस, go to the IAM, and from here you need to click on add option. Add पे click करना है, and there is one option add role assignment. So just click on this, and from here
you need to choose what kind of permission you want to give. So there are a lot of permissions here. अलग अलग चीजों की अलग अलग permissions है, and you don't have to worry about all the permissions, because in company whenever we have to give the permission to someone, so it will be there on the ticket, like what kind of permission we have to give, so it will be mentioned on the ticket. If we have to give the read only permission, so there will be reader permission mentioned in the ticket, so you have to follow it accordingly. There are some important permissions that I will discuss during the Azure ready class in the next weekend. So there are some permissions like reader, contributor, full access, administrators, global administrator permissions, user access administrator permissions. So that I will discuss in the next weekend. For now, I just want to give the reader permission to the user. Reader means user will be able to see my storage account, but user will not have any right to edit something, to modify something. This is just the reader permission is. So there are a lot of permission. If you will search related to the storage, so you will see a lot of permission related to the storage account as well. See, there are a lot of permissions related to the storage account as well. This I will discuss during the Azure AD. Not all the permissions are important. If time to time, if any user needs some permission, so their manager will request, they will raise the ticket that please assign this permission to this user. Then you can go through with the description. Every permission will have their description, what will happen, what will not. For now, I just want to use the reader permission. User can read, he can view the resources, but does not allow you to make any changes. User cannot do any changes, only he would be able to see the resources. What resource? I am just giving the access to the storage account, so user can only see the storage account. So just select the reader, just choose it like this, click on next. Now you have to select the members to whom you want to give the permission. किसको देनी है permission? So select members and choose the user account now. So here you can see there are two user accounts in my portal. I want to give the permission to U1, so I will just choose U1. It will come here. Then click on select. Now U1 has been added. Now click on next. This is the summary. I am just giving the reader permission. Then review plus assign. So permission has been added. If you go to this storage account and if you go to the roles assignment, if you click on this, so here if you scroll down, so under the reader you can see U1 has the reader permission. U1 के पास reader permission है, कहाँ पे है? It is only on this resource, मतलब इस storage account के ऊपर ही है. So what is the meaning of all these options that I will discuss during the Azure Active Directory. For now, U1 has got the reader permission on this storage account. Now let's go to the U1 user accounts portal. U1 के user account के portal पे चलते हैं. So this is the U1's user account portal. Right now, if you go to the storage, so he does not have any access. Access नहीं है उसके पास. Let me refresh the entire browser. So let's do the refresh once. And now if I go to the storage account, so he has got the storage account now. See, U1 को आ गया storage. If you click on the storage, so we can see all the options. सारे option दिख रहे हैं हमें यहाँ पे. If I go to, let's say, data storage under the container, I can also see my container. If I open this, I cannot see my data. See, data नहीं आ रहा ना, because I don't have the permission. See, I don't have the permission, because we have just given the read permission. So with the read permission, you cannot read the data inside the container. उसके लिए फिर अलग permissions होती है, that I will discuss in the next session. For now, he does not have the permission. यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखो पूरा error है. And this is only for the storage. If you go to the VM, see, user cannot see the VM, because we have not given the VM permission. We have just given the storage account permission. And if you go to the storage, and if the user will try to delete the storage account, so that will also not happen. वो delete भी नहीं कर पाएगा, देखो. Delete, delete. So see, user does not have the permission. Delete over scope is not possible. See, so this happens because of the permission. So
This is how we give the Azure AD authentication permission to someone. अभी तो मैंने read की permission दी है. If I will give, let's say, another permission called contributor, मैं आपको permission change करके दिखाता हूँ. Let me remove this. So select and delete. So permission has been deleted now. Permission delete हो रही है, देखो हट गई यहाँ से. Now let me again go to the add roles assignment, and there is one option privilege administrator. So just go here, and there is one owner permission, there is one contributor permission. So this permission I will discuss in the next class. For now, let's suppose I give the owner permission. Owner की permission दे दी. Click on next. Select the user account U1. So now the U1 will become the owner of this storage account. He can do anything now. So what user can do, देखो ये आप specify कर सकते हो. Allow user to only assign the role to the principal, or allow the user to do anything. See, ये वाला option ले लो. Then review plus assign. अब ये सब क्या क्यों है वो सब बाद में डिस्कस करेंगे. So I have given the owner permission. Now under the owner you can see in the role assignment, U1 is also the owner of this storage account. है? Now if I will go to the U1 portal and if I will refresh the browser. So this is the storage. If you click on this, and now if I go to the container, this is the container, open, and now we can see the data. If I will delete any data, for example, if I will select this one and delete, delete. See, delete is also done. Delete हो गया, क्योंकि उसके पास owner permission है ना. He can do anything. Even he can also delete this storage account as well. इसको भी delete कर सकता है वो. He can just click and delete. That is also possible because he is the owner of this particular storage. So this is called Azure AD authentication. So with the Azure AD authentication, you can specify what level of access you want to give to the user. So this is from the Azure portal. ये तो दिया मैंने Azure portal से, right? But for example, there is a user who does not have the Azure portal access. ऐसा भी कोई यूजर हो सकता है जिसके पास Azure portal का एक्सेस नहीं है, या फिर हम देना नहीं चाहते. बिकॉज द टेक्निकल पीपल विल गेट द एक्सेस टू द Azure portal. जो टेक्निकल बंदे हैं उनको तो मिल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, एनी डेवलपर इज आस्किंग, और इफ एनी support person is asking in the cloud, if any DevOps person is asking the permission, so they will get it because they have to use the portal anyhow. उनको तो use करना ही है. But the people who are not from the tech background, but their data is there in the Azure storage. मान लो कोई HR का बंदा है या finance का बंदा है, they are not from the tech background, but their data is being stored in the Azure storage. तो उनका data तो है, so they need the permission. So if you want to give them the permission, you have the option of Azure Storage Explorer, and under the Azure Storage Explorer, you can also assign the permission from the Azure AD authentication. जैसे अगर आपको पोर्टल का एक्सेस नहीं देना है तो मत दो. What you can do, you can simply go to the Azure Storage Explorer tool. इस tool में जाओ, and from here what you can do, there is one option sign in with Azure. ये वाला option. So now I am not creating any key. अब मैं कोई access key या SAS key create नहीं कर रहा. I will just click on sign in with Azure, and here we will just click on next. And now it will open the browser, and from here I will log in with my user ID and password of U1. U1 के user ID password से log in करूंगा मैं. इसको तो इंट्रा आईडी में ओपन करते हैं बिकॉज ये तो बंद हो गया है अब एक्सप्लोरर. सो लेट मी ओपन द ब्राउजर सेटिंग्स. ये बंद हो गया, आप लोगों को पता होगा इंटरनेट एक्सप्लोरर बंद हो चुका है. अरे स्पेलिंग, ब्राउजर, so choose a default browser, and here I will set Microsoft Edge as a default browser. So web browser is right now Internet Explorer. I will just click on choose set defaults by app.
That defaults app कैसे करते हैं इसको? Okay, just click on this, then Microsoft Edge. आजकल मैं डेस्कटॉप सपोर्ट के काम भूल गया हूँ. So just click on Microsoft Edge. Now it has become the default app. Now let me cancel it and let me open it again. So sign it with Azure. Now here I will use the user ID and password of U1. U1 के अकाउंट से लॉगिन करते हैं. So this is the U1 ID. इसको कॉन्फ़िगर करना है यहाँ पे. So just go, paste, next. Now the password was mojo क्या था? mojo @123. And in my mobile phone I will get the authentication, so I will approve it. कहाँ चला गया मेरा ऐप? अभी तक आया ही नहीं है. Approve. Nothing is coming in my app authenticator. Rahul wants to ask something. Yes, Rahul. Yes, sir, you can click. I can't use my authenticator, sir. Code आएगा. I just clicked it, but it is not coming. मतलब मेरे मोबाइल पे नहीं आ रहा है. ये देखो. नहीं सर, And ऑथेंटिकेटर ऐप में एक कोड रहेगा, कोड भी यूज कर सकते हैं. हाँ वही देख रहा हूँ मैं, वही नहीं आ रहा ना. ये देखो, ये यूज रहेगा वेरिफिकेशन कोड. वेरिफिकेशन कोड आ गया. हाँ. लेट मी ओपन दिस कोड एज वेल. कोड मेरे मोबाइल के जो ऐप है ना उसके ऊपर वो आईडी नहीं दिखा रहा है एक्चुअली, जो मैंने ऐड करी है. दैट इज द प्रॉब्लम. अच्छा. हाँ वो दिखाता फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट दैट इज नॉट कमिंग. लेट मी ओपन दिस अगेन. साइन इन का कोड भी नहीं आएगा ना. अरे आजा. और अकाउंट सेटअप में और तो नहीं आएगा सर. नहीं आ रहा ना, वो ऐड ही नहीं हो रहा, पता नहीं. देयर इज सम इशू विद माय ऑथेंटिकेटर आई गेस. लेट मी ओपन वन मोर थिंग. एक और अकाउंट क्रिएट करता हूँ. वेट, लेट मी डू इट फ्रॉम द स्क्रैच. ये मेरे मोबाइल पे नहीं आ रहा है. लेट्स गो टू द इंट्रा. Password is this one. So account is created. Let me log in with this password, user ID and password. So इसको मैं log out कर देता हूँ. Password is this one. Password, new password. Now let me set it up again. Done. Now it's done. So I will use this user ID.
what is the number? 37. साइन इन हो गया. Now I am able to sign in from the portal. So let me give the access to the U2. U2 को एक बार access दे देता हूँ मैं, because U2 also does not have any access. So I will just go to the admin portal and in the similar manner, इसको तो मैं हटा देता हूँ अब. This is not there. I will just click on add and I will give the access to U2 user account. So I will give full control owner. Next, member will be U2. Review plus assign. And then I will connect it with the Azure Storage Explorer. So U2 also have the access of owner in the storage. Now go here, cancel everything. Then sign in with Azure. Next. Now it will open the browser. So I will just choose U2. U2 से login करना है हमें. The password. Then the authentication. So let me approve from my mobile phone now. So code is 70. Yes. Now approved. So authenticated. See, authentication हो गया. Now you can return to the Azure Storage Explorer. Means you have logged in successfully. So you can close this browser. इस पे लिखा भी हुआ है, you can close this. So close. And now we can return to the Storage Explorer. So ऐसे करके आएगा, अपने आप ही आ जाएगा ये. And on the left side you can see my account has been added. See, my subscription, my ID has been added here. Now we can just click on Open Explorer. And here you can see the U2 user account. If you will expand this, so you would be able to see your detail. देखो आ गया storage app 001. And if you will expand this, so you would be able to see your data as well. ये देखो, ये blob and everything you will see. See, every data, everything has come now. ये सब आ गया. इसमें अभी reload करेंगे, आ जाएगा. Let's wait. So after some refresh, it will come. But if you will just give the read-only permission, then it will not come. So make sure the user have the permission. तो ये कुछ सर टाइम में आ यूजर वन जाएगा से यार. डेटा डिलीट हो गया ना सर? यूजर 1 से डेटा डिलीट हो गया था. हाँ सर, हाँ यार, आपने वो किया तो था. मैंने देखा ही नहीं. हाँ, सही सही पकड़ा. यस यस यस, देयर वाज नो डेटा. तो रिफ्रेश करने से भी नहीं आएगा. राइट. कॉन्ट 1 इज एम्प्टी. सो लेट मी अपलोड सम डेटा. अपलोड करोगे तो ही आएगा. एंड दिस यूजर कैन ऑल्सो अपलोड द डेटा फ्रॉम द टूल. यहाँ से भी अपलोड कर सकते हैं. आई हैव डिस्कस दिस वन इन द लास्ट क्लास. उसके पास ऑनर एक्सेस है, सो दैट यूजर कैन ऑल्सो अपलोड. लाइक सपोज इफ आई विल अपलोड any file or any folder, let me upload the tool. वो जो Azure Storage का tool है ना, उसको अपलोड कर देते हैं, because I have this one only in my VM. तो इसी को अपलोड कर देते हैं. See, now it will be uploaded. So the process is going on. See, and now the tool has been uploaded, and same tool you can see in the Azure portal as well. If you will refresh, see, same tool has come. So this is called Azure AD authentication. So with the Azure AD authentication, the access can be granted even on the portal as well and on the Azure Storage Explorer tool as well. कहीं पे भी आप grant कर दो. Now, this topic is also done. Access के सारे methods हमने समझ लिए हैं. So in the company you will see SaaS, you will see Azure AD authentication. ये कम मिलेगा देखने को आपको, and ये तो मिलेगा ही नहीं. No one will use this. Access key is very very rare.
SaaS you will see most of the time, and Azure AD authentication will be on the second rank. तो दूसरे नंबर पे आपको ये ज्यादा देखने को मिलेगा. Now these methods have been discussed. Let me delete the user account. So go to the intra, go to the user. इसी को डिलीट करना बस जो आपने बनाए हैं. डिफॉल्ट वाले को मत डिलीट करना. This is required to use the portal. So delete. Now done. Let me connect my charger. क्योंकि बैटरी डेड होने वाली है इसकी. Then we will talk about some different topic. Yes, Pooja. सर हमने अभी ये जो यूजर अकाउंट्स वगैरह क्रिएट किए थे, इसका कुछ चार्ज वगैरह नहीं पड़ता क्या? जैसे कि अगर हम कोई सर्विस लेते हैं तो वो पे एज यू गो के हिसाब से जाता है. चार्ज पड़ता है, लाइसेंस आते हैं इनके. यूजर के चार्जेस अलग होते हैं. और यूजर रिसोर्स ग्रुप डिलीट करने से डिलीट नहीं होता, ध्यान रखना. तो यूजर को आपको मैनुअली डिलीट करना पड़ता है, क्योंकि यूजर जो है वो सब्सक्रिप्शन के अंदर नहीं आता है. तो यूजर अगर बनाओगे तो उसको प्रैक्टिकल के बाद मैनुअली डिलीट कर देना. जो डिफॉल्ट वाला है इसका कोई चार्जेस नहीं है, दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उससे आपका पोर्टल मैनेज होता है. ठीक है. तो बाकी जो यूजर बनाओगे दैट हैज टू बी डिलीटेड मैनुअली. ये मत सोचना कि सब्सक्रिप्शन से रिसोर्स ग्रुप डिलीट किया एंड दिस विल बी डिलीटेड. नो, यू हैव टू डिलीट द यूजर्स एंड ग्रुप्स मैनुअली. बाकी रिसोर्स सब डिलीट हो जाते हैं रिसोर्स ग्रुप के अंडर, बट यूजर्स एंड ग्रुप्स हैज टू बी डिलीटेड मैनुअली फ्रॉम द Azure Active Directory. Now let's talk about different topic. So I will now discuss about the file share. This is the second topic. Before the file share, let's talk about object replication. पहले ये discuss करते हैं. See, let me open the notes also. इसका एक नोट भी है. Storage, yeah. See, what is object replication? So replication basically means copy and paste or update. Update something, transfer something, copy paste something. That is called replication. Object means anything, any data inside the container. Any data that we upload inside the container, we call them blob, we call them object. इसके अंदर जो भी कुछ डेटा अपलोड होता है, we call them container, we call them blob, we call them object. आप इसको कुछ भी बोल सकते हो. So object replication basically means, for example, we have one requirement. We have a storage account in the UK South region. एक UK साउथ में स्टोरेज अकाउंट चल रहा है, एंड देयर इज वन कंटेनर इनसाइड दैट, या उसमें 2-3 कंटेनर बने हुए हैं, एंड इनसाइड दैट कंटेनर वी हैव वेरी 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 इंपॉर्टेंट डेटा. वी हैव वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, एंड आई वांट टू क्रिएट द हाई अवेलेबिलिटी ऑफ दैट डेटा. उसका HA बनाना है मुझे. सो व्हाट आई वांट दैट I have something in my mind that in case if UK goes down, मान लो UK South goes down, so this storage account will get impacted, right? Just like in the VM scenario also, if the particular region goes down, if my data center goes down, so my services are going to get impacted. So this storage account is very critical. I have very important data inside this. So what I want that in case the storage account goes down or if any region goes down, so my data should be accessible from another particular region. That is my first requirement. Another requirement is, for example, I want the live replication. Live replication in the sense, I want to transfer whatever data is there in the UK South. In my container, I have a lot of data. So I want to transfer all the data which is in my storage account to another storage account which is in East US. सारा डेटा ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट आई है. प्लीज ट्रांसफर और प्लीज क्रिएट a copy of the data which is in the UK South container to East US container. This is my second requirement. So if you want to copy
If you want to copy your blobs, blob means the data which is inside the container between source and destination storage account. मतलब एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज में अगर आपको अपना डेटा कॉपी करना है, कौन सा डेटा? ब्लॉब का डेटा, ओनली ब्लॉब, no file shares, no tables, no queues, only container data, which is called blob. So if you want to copy your data from source to destination, मतलब एक स्टोरेज से दूसरे स्टोरेज पे अगर आपको कॉपी करना है, irrespective of region, region can be anything. एक स्टोरेज यूके में हो सकता है, एक यूएस में हो सकता है, that is okay. Then you can use the object replication. In the object replication, you can specify the rules, like what kind of data has to be replicated. इस storage से क्या क्या आगे जाएगा, that rule you have to define. Accordingly, the data will get copied. This option is available with the general purpose version 2 and premium storage account. मतलब जनरल पर्पस V2 स्टैंडर्ड में भी मिलेगा ये ऑप्शन, एंड प्रीमियम में सिर्फ ब्लॉब वाले अकाउंट पे मिलेगा. जो ब्लॉब ब्लॉक करके ऑप्शन आता है ना, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रीमियम अकाउंट. तो फाइल शेयर वाले पे नहीं, ओनली प्रीमियम ब्लॉब, बिकॉज दिस इज ओनली गोइंग टू डू द रेप्लिकेशन ऑफ ब्लॉब डेटा. तो ये उस पर भी सपोर्ट करेगा. इन ऑर्डर टू यूज दिस ऑप्शन, देयर इज वन ऑप्शन, ब्लॉब वर्जनिंग. So blob versioning means it is in the backend is going to create the history of my uploaded data. जितना भी डेटा मैं अपलोड करता हूं उसकी टाइम की हिस्ट्री रखना, उसके डेट की हिस्ट्री रखना, दैट इज कॉल्ड ब्लॉब वर्जनिंग. सो वर्जनिंग इनेबल करनी पड़ती है आपको ऑन बोथ द स्टोरेज अकाउंट, मतलब जहां से डेटा कॉपी कर रहे हो और जिसमें आप कॉपी करोगे, मतलब जहां से आप डेटा भेज रहे हो और जहां आप कॉपी करोगे, ऑन द सोर्स एंड ऑन द डेस्टिनेशन. ऑन बोथ द स्टोरेज अकाउंट यू विल हैव टू इनेबल द ब्लॉब वर्जनिंग फीचर. ये इनेबल होना चाहिए, तब जाके आप ये सेटअप कर पाओगे. सेकंड थिंग इज देयर इज वन ऑप्शन, चेंज फीड. So change feed is also one of the option that should be enabled on the source storage account. Means मेरे पास दो स्टोरेज है, one is in UK, one is in US. So this is my source. यहाँ से मैं डेटा यहाँ भेजना चाहता हूँ. So on my source, the change feed option should also be enabled. What is change feed? Change feed is going to create the logs whenever any changes will happen. इसका क्या मतलब है? If you will create the replication of any data from one storage to another storage, तो ये जो डेटा कॉपी पेस्ट हो रहा है या रेप्लिकेट हो रहा है या फिर लाइव अपडेट हो रहा है, उस केस में क्या होता है, लॉग्स जनरेट होते हैं. लॉग्स, कितने बजे कौन सा डेटा कैसे करके रेप्लिकेट हुआ था. सो देयर विल बी सम लॉग्स विच विल बी जनरेटेड. उसके जनरेट होने के लिए द चेंज फील्ड ऑप्शन मस्ट बी इनेबल्ड ऑन द सोर्स, क्योंकि डेटा यहां से जा रहा है तो यहाँ पे हमें लॉग्स जनरेट करने हैं. एंड दिस इज मैंडेटरी ऑप्शन, यू कैन नॉट स्किप इट. सो चेंज फीड and blob versioning should be enabled. Then you will be able to set up this option. So let's do it. इस practical को करते हैं, then you will understand more about it. So I will just go to the storage account and you can see I have one storage account here. एक storage मेरे पास already है, which is in the UK South region. Let me create one more storage account. So click on create and you can create it in the same region also, you can create it in the different region also. So I will create it in the different region. I will give the name pop star mojo jojo. So pop star mojo jojo will be the name, because we have to figure out some unique name. तो यही सब नाम दे देता हूँ मैं, आप लोग को जो देना है दे देना. यूनिक नेम देना होता है, that is why I am using such kind of names. And here in the region, आप कुछ भी region लो, it doesn't matter. ज्यादा दूर का मत लेना, because डेटा ट्रांसफर की भी कॉस्ट लगती है, ध्यान रखना. इफ यू विल ट्रांसफर द डेटा फ्रॉम यूके साउथ टू इंडिया रीजन और यूके साउथ टू यूएस रीजन, सो डिस्टेंस ज्यादा है ना, तो देयर विल बी डेटा ट्रांसफर कॉस्ट ऑल्सो. मतलब वो कॉस्ट भी चार्ज कर लेगा माइक्रोसॉफ्ट फिर. तो कंपनी में तो ठीक है, दैट इज देयर मनी, दे वांट टू वेस्ट इट, दे वांट टू इन्वेस्ट इट एक्चुअली, बट अपने पर्सनल लेवल पे मत करना ज्यादा दूर का रीजन. सो my primary account is in UK South, so here I will choose UK West. UK West पास में है UK South के, so region भी अलग हो जाएगा. UK ढूंढते हैं इसमें, UK, so UK West. So I have chosen UK West for Pop Star Mojo Jojo. Next, review plus create. So it will be a new storage account in a different region. Let's wait.
This one is created now. So now we have two storage accounts in Azure. Let me refresh. One is Popstar Mojo Jojo, another one is Storage 0001. So both are in the different region. This storage account in the UK South has some data. इसके अंदर कुछ data है. So let's go. Let me go to the container. So there is one container, cont01. If you open this, let me delete this one. ये फालतू का है, इसको हटा देते हैं. If you will keep this, that is fine, but वो उसका थोड़ा size ज़्यादा है. That is why I have deleted that. Now let me upload some fresh data. So upload. So I will upload these files. ये सब कुछ upload कर देते हैं उठा के, या फिर ये करते हैं, तीन चीजें. Now upload. So these data have been uploaded. So in this storage account, I have this data. इसके अंदर मेरे पास तीन फाइल है, and I want to replicate these three files into Popstar Mojo Jojo storage account. इसके अंदर उठा के मेरे को replicate करना है. So I have to set up the object replication policy. तो अभी तो बहुत छोटा डेटा है, but in case let's say there is a very huge data that you need to replicate to another storage account, so it will take time as per the network speed as well. नेटवर्क की जो स्पीड होगी उसके हिसाब से भी टाइम लेगा. In our case, it is just very you can say क्या बोलते हैं उसको, the data size is not too much, so it will be easily replicated, it will be easily populated. But in case of large data, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी files रखी हुई है, so it can take time also. So let's set up the object replication. So the very first requirement is the blob versioning must be enabled between source and destination storage account. मतलब ये वाला option blob versioning, this should be enabled on both the storage accounts. So how to do that? So go to the portal, go to your source. This is my source जहाँ से मैं data भेजूंगा, and this is my destination जिसको मैं data भेजूंगा. So just go to the source and let's see where is blob versioning. So blob versioning I guess is there in security. मैं ढूंढता हूँ because Microsoft has changed that option. Go to the configuration. Under the configuration यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? Let me see. क्योंकि ना वो change करते रहते हैं Microsoft वाले. That is why I'm also figuring out where is that option. Object replication. इसमें नहीं है. Data protection यहाँ पे होगा. See, so go to the storage account. Under the data management, there is one option, data protection. Under the data protection, if you will scroll down, ऐसे करके आएगा option. If you will scroll down, under the tracking, there is one option, enable versioning of blobs. You have to check this. आपको ये check करना है. And the second requirement is on the source. ये वाला काम तो आपको दोनों जगह करना है. You have to do this on both the storage account. Then on the source, जहाँ से आप data transfer करोगे, change feed option should also be enabled. So change feed is also coming here. देखो यहाँ पे आ रहा है change feed का option, ये रहा. Just below the versioning of blobs, there is one option, enable blob change feed. So you have to check this box also. So ये दो box check कर देना source में. Click on save. Save हो गया. Now go to the destination storage account, Popstar Mojo Jojo, and go to the data protection. And here we just have to enable the versioning. यहाँ पे हमें बस blob की versioning enable करनी है. We don't have to enable this option. Click on save. Accidentally अगर आप enable कर भी देते हो, it doesn't make any difference. तो कर भी दोगे तो कोई होगा नहीं कुछ, क्योंकि वो history generate करेगा बस. That's it. So this is also copied. Update हो गया है. Now let's go to the storage account of the source. जहाँ से data transfer करना है वहाँ चलते हैं. So this is my storage account. And from here I want to transfer my container 01 data. ये वाला data transfer करना है. देखो यहाँ पे एक और बन गया ना container, blob change feed के नाम से. So this has been created because I have enabled change feed option, जिससे history generate होती है. तो यहाँ पे जब भी कुछ काम होगा, so the history will be generated, the logs will be generated inside this container. अभी कुछ नहीं हुआ है. जब होने लगेगा तब यहाँ पे logs आ जाएंगे. What you have to do, this is my source storage, this is my destination storage. Under the destination storage, if I will go, I will just go to the container and here I will create one new container. इसके अंदर मैं एक container बना रहा हूँ. Container means one folder. So I will just go to the container
and just give the name. So I will give the name dest container. डेस्ट कॉन्ट नाम देते हैं इसका, डेस्ट कॉन्ट -01 या डेस्ट कॉन्ट 01. Then click on create. So I have created one blank container dest cont 01, and inside this there is nothing. Now I want to transfer my data from storage app 001 storage to popstar mojo jojo, and inside this dest cont 01 I want to transfer my data. तो इसके अंदर में मेरे को मेरा डेटा ट्रांसफर करना है. सो गो टू द सोर्स, इस सोर्स में जाना है, and here there is one option. If you scroll down, there is one option, object replication. So scroll down, and you can see under the data management, object replication option is there. So go to the object replication and you can see the description about it. इसके description आपको मिल जाएंगे. Just have to click on create replication rules. आपको इस पे क्लिक करना है. Right now there is nothing. कुछ नहीं है, blank है. तो create replication rules. Now you have to provide the destination details. आप कहाँ बैठे हो? You are on storage app 0001. यहाँ पे बैठे हैं हम. And where I want to transfer my data? I want to transfer my data with the destination storage account, and the name is popstar mojo jojo. इसमें डेटा ट्रांसफर करना है ना मुझे. Just choose this. Now you have to do the container pairing. मतलब कहाँ से क्या करना है? पॉप स्टार में तो करना है, दैट इज ओके, बट पॉप स्टार में कहाँ और कहाँ से डेटा उठाओगे? सो चूज द सोर्स कंटेनर. किसका सोर्स? जहां से डेटा जा रहा है. सो द नेम ऑफ दैट वन इज कॉन्ट 01. इसका डेटा चाहिए. कहाँ पे चाहिए? वेयर? सो इन दिस पॉप स्टार मोजो जोजो देयर इज वन कंटेनर डेस्ट कॉन्ट 01. इसके अंदर चाहिए. क्या चाहिए? पूछ रहा है क्या चाहिए. मतलब कोई फिल्टर विल्टर लगाना है. फिल्टर मतलब कुछ यहाँ पे कुछ मैचिंग करनी है कि यही वाला वर्ड अगर मैच हो जाए तो वही डेटा कॉपी करो बस. जैसे मान लो फाइल का नाम हो, फाइल 01 जहाँ जहाँ लिखा है ओनली दैट शुड बी कॉपीड. सो यू कैन अप्लाई द फिल्टर ऑल्सो. फिल्टर नहीं लगाना है, लीव इट. अब बोल रहा है कॉपी क्या करोगे? कॉपी क्या करना है? मतलब ओनली न्यू ऑब्जेक्ट्स का मतलब है जितना इसमें पड़ा हुआ है उसको मत कॉपी करो. whatever is there in the storage app 001 don't copy this. मतलब ये सब डेटा कॉपी मत करो, ये सब ऐसे ही रहने दो. इसके बाद जब मैं कुछ अपलोड करूंगा, इफ आई विल अपलोड समथिंग आफ्टर द एप्लीकेशन इज सेटअप, ओनली कॉपी दैट डेटा. उसी को कॉपी मारो. बट मेरे को सारा कॉपी करना है. आई वांट टू कॉपी एवरीथिंग. जो पहले से पड़ा है वो भी, and whatever new is going to get uploaded I also want to copy that. So what I will do, just change the rule. अभी only new करके selected है, click on change. Now you have the option. Everything मतलब जो पहले से पड़ा है वो भी, जो नया अपलोड होगा फ्यूचर में वो भी सब कॉपी होता रहे. ओनली न्यू ऑब्जेक्ट मीन्स जो पहले से पड़ा है दैट विल नॉट बी कॉपीड. रूल सेटअप होने के बाद जो आप अपलोड करोगे ओनली दैट विल बी रेप्लिकेटेड. कस्टम मीन्स आप डेट वेट डिफाइन कर दो कि इस टाइम में जो भी डेटा क्रिएट हुआ है इस टाइम से लेके इस टाइम तक ओनली दैट डेटा विल बी कॉपीड, रेस्ट विल बी एज इट इज देयर. तो इट्स अप टू यू. कंपनी की रिक्वायरमेंट के ऊपर है वो क्या कॉपी करवाना चाहते हैं. आई वांट टू कॉपी एवरीथिंग, सो क्लिक ऑन एवरीथिंग, click on save. Now all the data which is present inside my container is going to get copied. इसके अलावा और भी कंटेनर है आपके, so you can choose them also. और by default ग्राफिकल ऑप्शन से आप 10 कंटेनर ऐड कर सकते हो यहाँ पे. मतलब ऐसे ऐसे करके 10 कंटेनर यहाँ पे आ जाएंगे. अभी एक ही कंटेनर है तो एक ही का डेटा ट्रांसफर हो रहा है. इफ यू वांट टू ट्रांसफर द डेटा ऑफ मल्टीपल कंटेनर यू कैन चूज देम फ्रॉम हियर. 10 से ऊपर कंटेनर है अप टू 1000, उसके लिए फिर आपको स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी यूजिंग द JSON. JSON मीन्स जावा स्क्रिप्ट नोशन. तो अगर मान लो 1000 स्टोरेज का डेटा ट्रांसफर होना है तो एज्योर में एक JSON करके लैंग्वेज होती है, जेसन, उसके थ्रू स्क्रिप्ट बनानी पड़ेगी. सो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर. उसको अभी छोड़ो. क्लिक ऑन क्रिएट. बस ये सब चूज करने के बाद क्लिक ऑन क्रिएट. नाउ द रूल विल गेट सेटअप. सो इट इज सेटिंग अप द रूल. देखो 2 रूल बना रहा है क्योंकि एक स्टोरेज से दूसरे में डेटा जाएगा. एंड यू कैन सी द रूल हैज बीन क्रिएटेड. रूल बन भी गया. देखो यहाँ पे रूल बन गया है अंडर द ऑब्जेक्ट एप्लीकेशन. पॉप स्टार मोजो जोजो इज माई डेस्टिनेशन. उसमें से कॉन्ट 01 का डेटा कहाँ जा रहा है? टेस्ट कॉन्ट 01 के अंदर जा रहा है. एंड आफ्टर सम टाइम यू वुड बी एबल टू सी द डेटा इनसाइड द पॉप स्टार मोजो जोजो. तो एक बार देख लेते हैं.
अभी पॉप स्टार मोजो जोजो खाली था. If you go to the pop star mojo jojo, let me refresh. Go to the containers. Test count हमने बनाया था. Inside this, after some time, after few minutes, my data will get replicated. अभी कुछ नहीं आया है. 1 मिनट के बाद चेक करते हैं. My data should come here. तो क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं हम. So this is my source, and here we have the data. इसके अंदर count01 में ये सब डेटा है ना, 3 फाइल्स. So these 3 files will come here. वो तीनों यहाँ पे आ जाएगी. तो वेट करते हैं थोड़ा. 1 मिनट का वेट करते हैं. इट विल बी रेप्लिकेटेड देन. So let's wait. मैं रिफ्रेश करते रहता हूँ बैठे बैठे. सी ऑल माई डेटा हैज कम. आ गया. तीनों की तीनों फाइल्स यहाँ पे आ गई. So whatever data is there inside my cont01 of storage app 001, these data has become replicated to popstar mojo jojo destcont 001. So this is called object replication. Now if I will upload any data in my source storage account, for example this is my source, let me upload one new file. So go to the containers, and here I will upload some more data. So just click on upload, and this time I will upload this one as well. ये तो पहले से ही पड़ा हुआ है. I will upload this one and I will upload this one. So I will upload 2 assignment questions, and that should also get replicated. ये दो फाइल मैंने अपलोड करी है ना. This will also get replicated after some time. So let's wait for few seconds. Meanwhile, I am also posting the notes into the chat box, so you guys can download it. ये सारे नोट्स मैं चैट पे डाल रहा हूँ स्टोरेज अकाउंट के. Storage. Yeah, this one. So all the data, including the questions, I have uploaded. This one has to be closed. Now upload. कितनी फाइल आई है? 1 2 3. ठीक है. So I have also uploaded the notes of Traffic Manager, Azure App Services, storage account. So all the notes are done now. Mohit, I have uploaded the notes of 2 or 3 classes. So last time we did App Service, Traffic Manager, and Storage Account. So these 3 notes I have uploaded into the chat box. So you guys can download. Meanwhile, let me refresh from here. It has not come yet. तो अभी थोड़ा टाइम और वेट करते हैं.
Let's wait for few more seconds. आ गया देखो. So now the data has been replicated. Assignment questions भी आ गए दोनों के दोनों यहाँ पे. So this is how the object replication feature works. ये होता है object replication. So this is also very useful practical when it comes to the company. वहाँ पे setups रहते हैं just for the replication, just for the high availability. So this one is also done. Now let me show you the recovery option. Recovery नहीं, recovery बाद में करेंगे. Let me show you this one. क्योंकि ये पूरा अभी हम कवर नहीं कर पाएंगे, पूरा कल मैं कवर करूंगा क्योंकि इसमें थ्योरी ज्यादा है इस वाले टॉपिक में. तो इसकी बात करते हैं थोड़ा. लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसीज, इसी को कवर करते हैं बस अभी. सी देयर इज वन टॉपिक कॉल्ड लाइफ साइकिल मैनेजमेंट पॉलिसीज. तो इफ यू गो टू द स्टोरेज अकाउंट, नहीं इसकी भी बात नहीं करते क्योंकि इससे पहले आपको ये टीयर आना चाहिए. इसको हटा देते हैं. फाइल शेयर डिस्कस करते हैं, इसका किसी से रिलेशन नहीं है. सी so there is one topic called file share. So file share I discussed in the last weekend when I was discussing about container, file share, queues and table. उस टाइम मैंने आपको बताया था ये. If you remember, if you go to the storage account, so there are option container, file share, queues and table. So when I was discussing about the kind of data storage, so that time I have discussed about this option. So let me give you one briefing. So file share is one of the option from where you can create a share folder. आप यहाँ से एक शेयर फोल्डर बना सकते हो and that share folder can be attached as a network drive into user's laptop. यूजर के लैपटॉप में वो नेटवर्क ड्राइव की तरह अटैच हो सकती है. नाउ whatever data the user will keep inside that network drive, that data will be saved inside the Azure file share. For example, I have created a share folder inside the file share with the name of S1. Now I can attach this S1 file share as a network drive into user's laptop. We can also attach it inside the servers as well. We can also attach it inside the user's laptop as well. So we are not responsible for attaching this into user's laptop. That is not our job. We will just share the script to the user. User will do them. The user will do it themselves. We are not responsible for it. So once the network drive is attached, now user can keep their data inside that. User अपना data उसमें रख सकता है and whatever data the user will keep it, it will get uploaded to the Azure file share जो हमने बनाया उसके ऊपर जाके सेव होगा. So it will be on the cloud. So for a particular department, let's say for finance department, we can create a Azure file share and that file share can be added to all the finance members' devices. Whatever data they will upload, it will get uploaded to the cloud and all of the member in the finance who have the access, they would be able to see the data. So if the data which is uploaded by this member has to be shared with this user, so this user will have the access to that share folder, so he can also see that data. So it's like a centralized storage on the cloud. So let's see how does it work. So for this, you can go to the storage account. I will go to my source storage account because here we have some data. Then we can go to the file share option under the storage. Then you can simply click on file share. And here you have to give the name. आपको यहाँ पे नाम देना है कुछ भी. So I will give file share -01. Then there are option access tiers. So there are some option premium, transaction, hot and cool. So these options I will discuss tomorrow because these are important options. There are some theoretical concepts involved along with the practical. So for now, whatever default has chosen, leave it as it is. There is capacity. Capacity means जो share folder बनेगा, in that we can keep up to 100 terabytes of data. मतलब user इसमें 100 TB का data save कर सकता है, which is very huge storage. मतलब user के पास इस share folder में 100 TB का storage से मिलेगा उसको. So click on next. Do you want to enable the backup of this file share as well? So we will not enable any backup क्योंकि इसका एक topic है जो हम कल start करेंगे. This is a new topic. So remove the backup for now. अभी enable नहीं करना है. That I will discuss during the backup classes. So remove. Click on next. Validation successful. Then click on create. Now it will be created. So
One file share has been created with the name of file share -01. Let me show you from the beginning. So go to the storage account, go to the file share, and now we have a file share 01. Click on this. These are the details. ये सब इसकी summary है. There is one option, connect. So when you will click on connect option, where do you want to connect? Do you want to connect it on Windows? Do you want to connect it on Linux machine? Do you want to connect it on Mac? मतलब कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको इसको कनेक्ट करना है एज ए ड्राइव? सो आई हैव विंडो, सो आई विल चूज विंडो. क्या ड्राइव लेटर आना चाहिए नेटवर्क ड्राइव का? सो दैट इज अप टू यू. आपकी मर्जी है किस ड्राइव लेटर से आना चाहिए. आई विल लेट से चूज वी, कि वी ड्राइव से आए. देन देयर इज वन ऑप्शन, स्क्रिप्ट. जस्ट क्लिक ऑन शो स्क्रिप्ट एंड इट विल शो यू वन ऑफ द पावरशेल स्क्रिप्ट. तो ये पावरशेल स्क्रिप्ट है दैट यू हैव टू रन. ये आपको शेयर करना है यूजर के साथ. सो इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 445. मतलब फाइल शेयर कनेक्ट करने के लिए द पोर्ट नंबर 445 इज मैंडेटरी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर द इंटरव्यू. कौन से पोर्ट पे फाइल शेयर कनेक्ट होता है? इट वर्क्स ऑन पोर्ट नंबर 445. सो जस्ट कॉपी दिस स्क्रिप्ट. पूरी स्क्रिप्ट कॉपी कर लो. गो टू योर सर्वर. ये सर्वर है, इस पे जाओ. ओपन द पावरशेल. पावरशेल पे चलाना है. सो देयर आर पावरशेल इन द विंडोज नाउअडेज. जस्ट ओपन द पावरशेल. ये सब डिफॉल्ट मिलेगा आपको. एंड जस्ट कॉपी पेस्ट दैट स्क्रिप्ट. कॉपी पेस्ट करो, देन एंटर. नाउ इट विल इनिशिएट द कनेक्टिविटी टू माई Azure पोर्टल एंड माई फाइल शेयर. सो यू कैन सी द टेस्ट आर बीइंग हैपनिंग. टेस्ट हो रहा है सब कुछ. वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्स. सो इट इज इनिशिएटिंग ए कनेक्शन. कहाँ से कनेक्शन बनाएगा? पोर्ट नंबर 445 से. और क्या रहा है देखो, एक नई ड्राइव ऐड करो विद द नेम ऑफ लेटर नंबर वी. लेटर नंबर वी ऐड करो. कहाँ से ऐड करो? स्टोरेज ऐप 001 के स्टोरेज अकाउंट से, जहाँ पे फाइल शेयर बना हुआ है देखो. और फाइल शेयर का नाम है फाइल शेयर -01. परसिस्ट का मतलब है चाहे ये लैपटॉप, चाहे ये सर्वर कितनी बार भी रीस्टार्ट हो जाए, ये ड्राइव वहां से हटनी नहीं चाहिए जब तक वो खुद ना हटा दे. मतलब ऐसा होता है ना कभी कभी कि रीस्टार्ट मारा, ड्राइव हट गई. तो परसिस्ट का मतलब है आफ्टर द रीस्टार्ट इट शुड नॉट बी रिमूव्ड. और अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाया, ये बोल रहा है अगर ये कनेक्ट नहीं हो पाया एल्स स्क्रिप्ट में, तो ये कह रहा है कि एरर आ जाना चाहिए. एरर कौन सा आना चाहिए? ये वाला. तो एरर भी पहले से ही फीडेड है स्क्रिप्ट में, पहले से ही एरर बना हुआ है कि अगर कनेक्ट ना हो पाए तो ये वाला एरर आ जाए. सो इट इज इनिशिएटिंग द कनेक्शन. लेट्स वेट. थोड़ा सा वेट करते हैं. हो गया देखो, आ गया. एडिट सक्सेसफुली. वी ड्राइव ऐड हो गई है. अभी तक आपने कुछ डेटा नहीं रखा है. साइज इसका वही है 100 TB का. एंड इफ यू विल गो नाउ टू द फाइल एक्सप्लोरर, सो यू शुड बी एबल टू सी योर नेटवर्क ड्राइव. ये देखो आ गया नेटवर्क ड्राइव. ऐसे आता है ना कंपनी में. तो ये फाइल शेयर 01, ये आपके एजोर की लोकेशन, 100 TB का स्पेस देखो. और इसके अंदर कुछ भी रखो. लेट मी अपलोड समथिंग. ये डाउनलोड वाला ये कॉपी करके रख देते हैं इसके अंदर. ये अपलोड किया मैंने इसमें. सो कॉपी पेस्ट कर दिया. नाउ इट शुड बी विजिबल इनटू माय Azure फाइल शेयर एज वेल. आप यहाँ पे जब जाओगे ना, इन द ब्राउज अंडर द फाइल शेयर, यू शुड बी एबल टू सी योर डेटा. तो यहाँ पे दिखेगा. और आप जो भी अपलोड करोगे इट विल बी सेव्ड इन द सेंट्रलाइज्ड स्टोरेज ऑफ द क्लाउड. क्लाउड के अंदर आके सब कुछ सेव होगा. और यही स्क्रिप्ट अगर आप किसी दूसरे यूजर को भी दे दोगे, वो भी चला लेगा अपने डिवाइस पे, तो उसको भी ये सारा डेटा दिखने लग जाएगा वहां पे. तो शेयर डेटा जब हमें शेयर करना होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क ड्राइव, सो वी कैन यूज दिस काइंड ऑफ फाइल शेयर. अब यही फाइल शेयर अगर ऑन प्रीमाइसिस में यूज करना होता है, तो वहां पे अलग से फाइल सर्वर बनते हैं. उसके लिए फिर अलग से स्टोरेज बनाओ, उसको शेयर करो. दैट्स ए ऑन प्रीमाइसिस कॉन्सेप्ट. क्लाउड पे करना है, सो वी हैव टू यूज द फाइल शेयर फंक्शनैलिटी. अब इस फाइल शेयर में कुछ रिकवरी वगैरह भी है, जो मैं कल डिस्कस करूंगा, क्योंकि हमें स्टोरेज डिलीट करके रिकवर करना, ब्लॉब डिलीट करके रिकवर करना, फाइल शेयर डिलीट करके रिकवर करना, ये तीनों स्टेज मैं कल आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा. और ये इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, और इसकी थ्योरी एंड प्रैक्टिकल. सो दीज 4 टॉपिक्स वी हैव टू डिस्कस. दिस इज 30 मिनट्स ऑफ टॉपिक. इसमें आधे घंटे लगेंगे कल. तो स्टार्टिंग में इसको खत्म करके देन आई विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक. सो कल माइट भी मैं या तो बैकअप स्टार्ट करूं, बैकअप एक लेंथी टॉपिक है, या तो फिर मैं एजोर रेडी स्टार्ट करूं. जो भी टाइम को देख के हमें लगेगा कि हम इसको कवर कर पाएंगे, अकॉर्डिंगली वी विल स्टार्ट. सो फॉर नाउ
we can just wrap it up. So let's connect tomorrow. Thank you very much for your timing. See you tomorrow. Good night.